towards the end, I'll have to switch off the live mode, so I'll just put it on recording also on to the cloud. Okay, there it goes. Okay, all right. So today, friends, we are going to look at this very important topic. बहुत जरूरी और बहुत, I cannot emphasize enough how important this topic is. This is really ये एक fundamental topic है, एक building का जो main pillar, main foundation है, इस तरीके का ये topic है, foundational है. अगर ये आपके जिंदगी में ना हो, if you really don't understand this, and then a lot of things that you're going to do will be wasted. Okay, now I'm just going to make George also co-host, so if anybody joins late, please put them because I can't see. Okay, now how to develop a healthy self-esteem. अपना आत्मसम्मान, एक अच्छा आत्मसम्मान कैसे बनाना है इसके ऊपर है, क्योंकि it has effect on your job, on your personal feelings about yourself, आपके relationship में. अगर आप अपने आप को नहीं प्यार कर सकते, रिस्पेक्ट कर सकते, तो आप बहुत गलत तरीके, आपके सारे लाइफ में lot of things will get little disturbed. So now what I'm saying is, अभी जिनको हिंदी, those who want little Hindi, it is आज reading थोड़ा English में, afterwards I will talk to you after the session. कुछ points समझ में नहीं आए तो, but क्योंकि बहुत सारा cover करना है, I will just try to emphasize it in English. Okay. For now. Okay, so now here's what I'm okay. Now here I require two volunteers. One must be daddy or mummy, a parent, and one must be a son's role, child's role. Who wants to do that? It is a scene of showing report card. Showing report card. Okay. Anybody wants to do that? Report card show karna hai, report card. Who wants to do that? Okay, I'm going to ask, if you don't come forward, I'm going to ask Amen and Manna to do it. Okay. So Amen, are you there? Okay, so Amen, आप daddy हो, और Manna is the daughter. Manna is trying to show her report card to you. Manna, आपको थोड़ा role play करना पड़ेगा. आमिर, आप डैडी हो और आप बोल रहे हो क्या रिजल्ट क्या है, बट मन्ना हैज टू रिप्लाई, एंड अ रिजल्ट इज नॉट गुड, तो आप गुस्से में उसको आप उसको कुछ बड़ा, क्या बोलते हैं, भला बुरा कहोगे, 2-3 शब्द उसको, तुमको इतना भी नहीं आता, मैंने इतना मेहनत किया है, सो शी हैज failed or she has not done good in exams. Okay, all right, start. Okay, so hi daddy, I want to tell you something. What? Just please don't be angry. Actually the thing is, I got my report card today. Oh, okay. Show me. What did you do in your exams? So I actually I didn't score good this time. I actually prepared a lot, but don't know. I was not able to score good. I don't want this excuses. Okay, this is all because of your phone. You want to be a doctor, and this is you are a science student, and these are your grades. Look at that, man. What is this? But give me your phone. I just no give me your phone. Okay. No, actually, Dad, it's not my fault. It's due to the online lectures and all. I was not able to learn properly. So the others failed too. Yeah. All of them. All of your all okay, class failed. Okay, very good performance. But I want little more intense performance, little more intense. So I'm going to ask Leah and Joyce. Leah and Joyce are friends, so they should be able to do it. Leah, good job. But I want Leah, Joyce, will you be the mother, and Leah, can you be the daughter? Can you try? Hello, Leah and Joyce. Okay, okay. Anyway, no problem. So okay, excellent job by Amin and Manna. Amin, तो तुम अगर वाकई में नॉर्मली पेरेंट्स क्या बुरा भला क्या शब्द यूज करते हैं बच्चों के ऊपर अगर जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते? What words? My parents.
They not was like it's all generally, because of your phone. Like you are always generally, playing this and that, and generally, what words do they use for their children when they get really angry with them, frustrated with them? क्या शब्द use करते हैं? Anyone? Brag. हाँ? disappointment. I'm disappointed with you. Yes, very good. और कोई शब्द है? Yeah. हाँ? बेवकूफ बोलते बेवकूफ तुम कितने बेवकूफ हो मैं समझ नहीं सकता और गुड फॉर नथिंग बोलते कुछ काम काज के नहीं हो तुम Yes, you are good for nothing, man. Like you are a science student and these are your grades. okay, let's see. So there are people who say that, and that happens normally. My parents also said these things, so this it does happen. Now look at this. I mean, iska kya hota hai? So when you hear words like you're useless, stupid, worthless, in today's, so we kya bolte hain? We are going to learn about loving and respecting. हम अपना यहाँ पे हमारे जो आत्मसम्मान है या फिर आत्म छवि है उस पे इफेक्ट होता है, and that is where we are unable to love or respect ourselves. Sometimes it happens. और कभी कभी जाने अनजाने में हमारे घर वालों से गलती हुई हो या फिर कहीं पे किसी कुछ चीज हमने सुनी हो देखी हो जिसकी वजह से हम अपने आप को हमारे सेल्फ इमेज में या सेल्फ एस्टीम में कुछ जैसे हम अपने आप को देखते हैं अपने बारे में सोचते हैं, there is some effect there, and that is why we become easy victims to peer pressure. दोस्त हमारे पे हावी हो जाते हैं, हम addictions में जाते हैं, हम डिप्रेस लोनली महसूस करते हैं, we don't have confidence, and this can in turn cause you to take impulse. यानी कभी-कभी इसके वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं. Okay, now an important distinction between self image and self esteem, an important distinction between self image and self-esteem. Okay, now I don't want to we'll quickly read through it. ये थोड़ा बड़ा है, just give me 5-10 minutes more after 11 please. Self-esteem is the opinion you have of yourself. It can be based on your attitude to the following aspects: your value as a person, आप अपने आप को क्या value, the job you do, your achievements, how you think others see you, your purpose in life, your place in the world, your potential for success, your strength and weakness, your social status, how you relate to others, your independence or ability to stand on your own feet. Low self-esteem results from you having a poor self-image caused by your attitude to one or more of the above. Example, you do not value the job you do highly, or you feel you have no purpose in your life. So what basically self-esteem is कि हमारा आत्मसम्मान क्या है, हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं, हमारी खुद के बारे में क्या राय है. You think you're a good person, bad person, poor person, not I'm just an average person. अगर आप हमारे अपने बारे में ऐसा सोचते हो, then you will have these kind of things. Let me just see. Okay, has Angel joined? Oh, I don't think it has. Angel joined? Yes, Pastor. Oh, okay, there. Okay, great. Okay. So how do you think others see? So your purpose in life, तो तुम्हारे job, तुम्हारे social status, इससे सब तुम अपने आप को हमेशा तुम सोचते हो कि मेरा एग्जाम में परफॉर्मेंस इज बेटर, दैट मींस आई एम गुड, इफ नॉट गुड देन आई एम बैड. ऐसे अलग अलग तरीके से somebody said. So it has its effect on how you think of yourself. What is self image? Self image is how you see yourself. आप अपने आप को कैसे देखते हो. पहले आप अपने बारे में, सेल्फ एस्टीम इज आप अपने बारे में कैसे सोचते हो, कैसा महसूस करते हो, एंड सेल्फ इमेज तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम्हारा खुद के बारे में तुम्हारा पिक्चर क्या है. जैसे अभी एडम ने डोनाल्ड डक का नहीं, आमे ने डक का रखा है, नॉट दैट ही इज अ डक, बट समटाइम्स यू हैव अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ इन योर हार्ट, लाइक some kids like keeping some Japanese samurai and wrestling. That's, you feel that's your purpose. But sometimes you have this picture of yourself which only you know, which is not for the world. कि तुमको पता है कि तुम कैसे हो. This may be how you see yourself physically. It may be more about the idea you have of yourself, which could also be called self-concept. It is very important as it affects your self-esteem and confidence. Self-image includes what you think you look like physically, how your personality come across, तुम्हारी personality कैसे, तुम physically अपने आप को कैसे देखो, ये तुम्हारी picture के बारे में. तुम खुद का अगर picture निकालोगे तो तुम अपने आप को कैसे देखोगे. What kind of a person you think you are, what you think others think of you, how much you like yourself or you think others like you. Okay. So just in short, for example, if you think
अगर तुम अपने आप को एक कॉकरोच की तरह देखते हो तो वो तुम्हारा क्या हो गया, सेल्फ इमेज हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया. If you see yourself as a cockroach, is that self image or self esteem? Anyone? It's your self image. Okay, but when you, because you see yourself as a cockroach, you also feel you're a cockroach. तुम cockroach की तरह सोचते, तुम्हें लगता है मैं तो cockroach हूँ, तो मेरी जिंदगी कॉकरोच की तरह रहेगी. आई विल ऑल्सो थिंक लाइक अ कॉकरोच, आई कैन नॉट डू बेटर. ये हो गया तुम्हारा सेल्फ एस्टीम, क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनल पिक्चर गलत है खुद के बारे में. तो some people may think they are good as a lion, strong, brave. तो तुम्हारा, then you, that is your self image. Your self image is a lion, so you will feel as strong and powerful as a lion. Okay. Now, of course, we are made in the image of God. Let us not forget that. हमको अपने आप को पंप नहीं करना है कि पंप की मैं lion हूँ, lion हूँ, lion. We are in God, and definitely there is no limit. You can be even greater than a lion. Now the vicious, इसका क्या इफेक्ट होता है, ये सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम अगर क्रैक्ट हो, अगर गलत हो हमारे अंदर, which happens, I think 90% of youngsters have that problem. Okay. For example, if I believe I am not good at maths, I will feel fearful every time the teacher asks me a question. Because of my nervousness, I'm most likely to give the wrong answer. This failure makes me believe that I'm really bad at maths and makes me more fearful and sets me up for further failure. The vicious cycle will lower my self-esteem. तो अगर मुझे लगता है मैं मैथ्स में अच्छा नहीं, अगर मैं अपने बारे में ऐसा सोचता हूँ कि यार मैं तो मैथ्स में एकदम डफर हूँ, देन ऑटोमेटिकली टीचर क्वेश्चन पूछेगी तो मैं इतना नर्वस हो जाऊंगा, तो मैं 100% गलत जवाब दूंगा, और उसके वजह से मैं अपने आप को और कोसूंगा. सो यू अंडरस्टैंड ये कितना गलत सर्कल. सेकेंड थिंग, बट ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा या इसके बिल्कुल विरुद्ध, इफ आई बिलीव कि अगर मैं कॉन्फिडेंस करता हूँ कि नहीं मैं मैथ्स में अच्छा कर सकता हूँ, आई कैन वर्क हार्ड, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मैथ्स में करूंगा, अगर भले आई कैन ओवरकम इट, तो जब टीचर अच्छे सवाल देगी, देन आई विल रियली गिव माय बेस्ट, कॉन्फिडेंटली आंसर करने की कोशिश करूंगा. और उससे क्या हो सकता है कि उससे मैं वाकई में मेरी रिकलेक्शन शक्ति, थिंकिंग शक्ति अच्छी होगी, एंड आई कैन थिंक क्लियरली. कॉन्फिडेंस की वजह से आई कैन मोस्ट लाइकली गिव अ गुड आंसर, और अगर मेरा आंसर अच्छा था देन आई विल बी मोर एनकरेज एंड पॉजिटिव. ओके, आप ये नोटिस कीजिए, जब आप इनकॉन्फिडेंट होते हो क्लास के अंदर या एग्जाम के वक्त, इट विल रियली मेक इट वेरी टफ, बट यू हैव टू ऑलवेज, you know, when you're confident you can think and answer clearly. Now ये golden rule आप याद देखिए नीचे, what I believe will decide how I feel, and what I feel will decide how I act or behave. हाँ, तो मैं जैसा अपने बारे में सोचता हूँ या मैं विश्वास करता हूँ, मैं उसकी तरह ही मैं फील करूंगा और उसी तरह मैं एक्ट करूंगा. ओके, रिमेम्बर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो तुम्हारा जो ओरिजिनल ओपिनियन है अपने बारे में अच्छा होना, यू मस्ट सी योरसेल्फ एज अ गुड पर्सन. नाउ होता क्या है, सोशल मीडिया, तुम जब टीवी पे देखते हो, पिक्चर देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, टिकटॉक, यू सी, you on wherever you go, you see people with perfect bodies, advertising company, models, hero, heroine, और तुम अपने आप को you compare with them, and that's why you always have this feeling of not being perfect, not being good enough, because this is actually a false world. ये सब इनका एडवर्टाइजिंग है. यू नो, इंस्टाग्राम में तुम देखते हो, फेसबुक के, तो तुम हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, तो इससे तुम्हारा सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम भी काफी बार, यू डोंट लाइक योरसेल्फ, यू डोंट फील गुड अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज, and it's not really good for you to keep going on social media. You know, it is not, lot of things are fake also over there. Now which one would you, now यहाँ पे एक सवाल पूछता, अगर आपके पास एक बाइसिकल हो तो आप किस किस एक बड़े पेड़ पे बाइसिकल लॉक करोगे चेन के साथ, इस छोटे बुश पे? कैन एनीवन टेल मी where will you lock your bicycle? कहाँ पे अपनी बाइसिकल लॉक करोगे? पेड़ को लॉक करो. yes, tree, right? yeah. Why the tree? Ivan also attend, or Eben answered. Yeah, Abel, yeah, go ahead. Why the tree and why not that small bush? Because anyone can take the bush away, but you cannot move the tree from its place. Yes, okay. Now, okay, one simple thing is the tree is very strong.
the bush can be bent, huh? The wind comes, the bush will bend, fall, anything, कोई भी निकाले, but tree को lock के tree is very strong. So similarly तुम्हारा सेल्फ एस्टीम जो है या तुम्हारा सेल्फ, वो ऐसे पेड़ की तरह या चट्टान की तरह स्ट्रांग होना चाहिए. अगर तुम वीक हो, तुम्हारा खुद के बारे में पिक्चर एकदम वीक है इस बुश की तरह, तो तुमको बहुत लोग तुम्हारा एडवांटेज लेंगे, तुमको यहाँ वहां पुश करेंगे, तुम जो नहीं चाहते वो तुमसे करवाएंगे. एंड दैट इज वेयर यू विल ऑल्सो एंड अप लिविंग अ फेक लाइफ. तुम जो जिंदगी भी जियोगे, इट विल रियली नॉट बी द लाइफ यू वांट टू लिव. यू विल नॉट इवन बी living for your own happiness, you know. That's why you're always trying to please other people or trying to do things, okay, for this. Now can I need somebody who can just put their video on and walk across the room. Okay, can we have a, okay, Rohan tum karoge? Okay, हाँ, तुमको क्या करना है रोहन, अभी तुमको पीछे जाके ऐसे चल के आना है धीरे धीरे. ओके, बट तुमको ऐसे चलना है जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई बोन्स ही ना हो. तो तुम कैसे चलोगे? ट्राई कीजिए, पीछे चल के आइए धीरे धीरे, या फिर आपके कैमरा मूव होता है कि नहीं पता नहीं. आप कैसे चलोगे अगर आपके पास बॉडी में बोन्स ही ना हो तो? Sorry, but I can't. अच्छा, आप क्या, ओके, anyone else wants to volunteer? Put your camera on. Come on, no one? Arey, be sporty, you guys are young here. Anyone? Just put your camera on, just walk across the room. Okay, but I understand कि आपके पास अभी it's night time, family members are there, so I'll just show you this video. Okay, look at this guy. He's got no bones. So this is exactly how it is. अगर तुम्हारे body में bones ही ना हो तो तुम्हारी, your body whole appearance will look really disgusting. It will look like silly and creepy. No, you know, because your bones is what gives you a frame and a personality. You know, if your body, your appearance is very much important. You know, though outwardly तुम हो, लेकिन जब तक तुम्हारा bone structure नहीं है, तब तक तुम खड़े नहीं हो सकते. You cannot really even look or seem like a person. So friends, that is exactly how your self-esteem is the bone of structure, skeleton of your personality. Okay, जिसके ऊपर तुम्हारी, अगर तुम अपने आप को strong महसूस करते, you know you're good, then your entire personality will be strong. Okay, you know how the skeleton hangs in the science. अभी वही चीज बताई है. The self-esteem is like your physical skeleton is within you. You cannot see it with your eyes, but you can observe the effect of positive self-esteem. It supports you, makes you feel worthwhile. अगर तुम positive self-esteem हो, तुम अपने आप के अच्छे, तुम अपने आप को valuable समझते हो. You feel people can love you and you can love them back. कभी, a lot of times some people feel, no, who will love me? मैं अकेला हूँ, who, you know, I don't, nobody will value me. ऐसे भी सोचते हैं. It enables you to be pleased with your successes without bragging or downplaying their value. Self-esteem provides the inner strength that provides the power to try, to try again. यानी आप failure हो गए तो भी आप फिर से try करोगे. आप discourage नहीं होंगे. You know, that is important. You know, because so many times you will not do well. You know, and that's very self-esteem. जिसका अच्छा होता है, he say, okay, so what? I can immediately try again. Broken bones create pain. So that's how causing the body to slump. So इसी तरह हमारा जैसे बोन फ्रैक्चर होता है, उसी तरह हमारे सेल्फ एस्टीम का भी फ्रैक्चर होता है. कभी को किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया कहीं पे, लोग हम पे हंस के, so then you feel discouraged. It is something gets broken inside you. You know, for a person with weak self-esteem, each mistake creates a pain of feeling worthless, feeble self. Okay. A person lacking confidence feels unwanted, unlovable, incapable much of the time. Such feeling disable people for daily living. The activity we must play show okay, healthy self-esteem. तो इसीलिए हमको लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं होगा, मेरा लाइफ ऐसे ही रहेगा. That is the feeling you get क्योंकि तुम अपने बारे में अपने आप को वैल्यू नहीं करते, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम डैमेज होता है. Okay, now what is low self-esteem? Low self-esteem leaves its mark on individuals
ओके यानी अभी आपने देखा सेल्फ एस्टीम का अपना पर्सनालिटी के लिए क्या मायने रखती है, लेकिन लो सेल्फ एस्टीम क्या होता है, यानी अगर आपकी लो सेल्फ एस्टीम नेगेटिव हो तो क्या होता है, इट मेक्स यू फील पावरलेस। बहुत से बार यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, पूरा दिन आप वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो, यू फील यू कांट डू इट। सेकेंडली, बीइंग एक्सेसिवली लाउड और नॉट टॉकिंग मच, तो दोनों एक्सट्रीम होते हैं। समटाइम्स जिनके लो सेल्फ बहुत जोर जोर से बात करते, सबको डोमिनेट करते, या फिर वो कुछ भी बात एकदम चुपचाप रहते। सो दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। स्कूल परफॉर्मेंस बिलो देयर एबिलिटीज, स्कूल में आपके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होते। एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी सेइंग नो टू ड्रग्स, अल्कोहल और सेक्स, आप गंदे चीजों को ना नहीं बोल पाते when somebody forces you, needing to be right at all times or always feeling wrong. So there are two extremes. एक तो you feel you feel you need to be right, you हमेशा अपनी बात प्रूव करने की कोशिश करते हो, तुम हमेशा राइट ही हो, सारे गलत है। अदरवाइज यू ऑलवेज फील कि सेकंड एक्सट्रीम इज यू फील कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आई एम ऑलवेज, मुझे कुछ पता नहीं होता। सो दिस इज वेयर इट इज। ओके, अगर आप हेल्दी सेल्फ एस्टीम हो, यू विल नो दैट समटाइम्स यू आर राइट, समटाइम्स यू आर रॉन्ग। Okay, judging self and others by clothing labels or status symbols. So खुद को जज करना, दूसरों को जज करना by clothing label, अरे इन्होंने सी व्हाट क्लोथ्स दे आर वेयरिंग, इन्होंने तो ये तो फेक है, ये तो नाइकी नहीं है, ये तो नोकिया का शूज पहना है, यानी ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं। ऑलवेज लुक एट ब्रांड्स। रिफ्यूजिंग टू लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, कोई तुमको गलत कहता है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम ये नहीं सुनते कि अरे वो तुमको that person has showed you something so you can improve, you get very angry, you don't like criticism. Making excuses for inappropriate action, sometimes I have worked with youngsters, so I know one particular youngster I worked with will never do the job, never, but always will have some excuse. नहीं मैं late हो गया था, नहीं मैं ये काम नहीं कर गया, always, कभी never will take responsibility. Refusal to take response, fearing to try something new or taking risk, कभी तुम अपने आप के responsibility नहीं लेते। Taking risk, inability to accept praise for accomplishments. Low self-esteem returns from you and having a so कभी को risk नहीं लेना चाहते। Low self-esteem results from you having a poor self-image caused by the attitude to one or more of the above. Okay, the same thing. अभी next, सिम्टम्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, इसके क्या और क्या इफेक्ट होते हैं कि यू हेट बीइंग इन अ ग्रुप, तुमको लोगों के बीच में रहना या टीम में रहना अच्छा नहीं लगता। यू डोंट वांट, यू वांट टू बी अलोन, बिकॉज कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम रिजेक्ट हो जाओगे, नोबडी विल टॉक टू यू, इसके डर से यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल। यू फील सॉरी फॉर योरसेल्फ, तुम बार बार यू फील कि मैं बहुत बदनसीब हूँ, यू हैव मेनी रीजंस कि तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे। So you always say नहीं, तुमको नहीं पता पास्टर हमारे घर पे कितना झगड़ा होता है, आपको नहीं पता कि हम कितने गरीब बैकग्राउंड से हैं, आपको नहीं पता कि मैं कितना डिस्करेज हो गया हूँ, आपको नहीं पता मेरे चाइल्डहुड। So you always have so many, sometimes you blame your parents, you blame your brother, your sister, but you always have this self pity, खुद पे रहम हमेशा करना, constantly compare yourself with others around you. I'm not as good as this, I'm not good as my friend, I'm not good as my sister, my brother, my cousin. Always compare करना किसी को, किसी के साथ अपने आप को। कभी कभी घर वाले भी करते हैं, I admit it, but that's not good really. Lack of confidence to try anything, lack of confidence to do anything, very dependent. कभी खुद डिसीजन नहीं ले पाते, हमेशा किसी को पूछना जरूरी होता है, you need someone's help. While it is normal once in a while, but you're always like that, so that's not good. Very sensitive to other people, खुद का काम करने के लिए भी you need help. Very sensitive to other people. किसने तुम्हारे बारे में कहा, अरे यार तुम ऐसे क्यों हो आज, somebody passes some comment, तो उसी के बारे में सोचते रहते, अरे यार मैं वाकई ऐसा हूँ, वाकई, तो कोई भी कुछ कहे तुम्हारे दिल को बहुत लग जाती है। You react negatively to criticism, sulking, pouting, crying, screaming. Live in the past always. You do not know what my past has been, my background, upbringing, childhood. Sorry, this is the same thing that I said earlier. So हमेशा भूतकाल के वजह से ब्लेम करना अपने प्रेजेंट को वर्तमान काल में। Afraid to speak for yourself and given to peer pressure easily. खुद कभी बोलते नहीं हो, जो दोस्त बोलते हैं वो उसी को हाँ हाँ बोलते हो, कभी अपना ओपिनियन बोलने से नहीं, आई डिसएग्री, हमेशा ग्रुप के साथ जाते हो।
cannot admit your mistakes openly. You cannot admit. तुम कभी अपने mistakes openly नहीं admit कर सकते. तुम्हें डर लगता है. I think there are a lot of people who can't even say, or like if you ask somebody, have you seen this movie on Netflix? तो तुम क्या करोगे? हाँ, I have seen, of course, because you don't want to say that you haven't seen it, because तुमको लगे सब लोग तुम पे हंसेंगे. So तुम झूठ बोलते. So that is also a kind of self-esteem problem. Suffer from a superiority complex. Now this is another end of low self-esteem. You feel you're far better than other people because actually you're feeling inferior complex. So तुम अपने आप को compensate करने के लिए ऐसा बता कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. So ये artificial defense होता है कि अपना कि दिखाने के लिए कि I'm very strong. Bullies are usually people with inferior complex. Constantly brag. जो बड़ाई करते बार बार वो एक्चुअली इंफीरियर होते हैं, इसलिए उनको बोलना पड़ता है बार बार कि देखो मेरे अंकल का इधर कांटेक्ट है, मेरा भाई है, वो है. Bully other children constantly, feel threatened every time, sometimes get appreciated or perform better. Okay, feels threatened every time someone gets. तो किसी और की बड़ाई हो जाए, somebody praises your friend, तुमको अच्छा नहीं लगता. Somebody praises your brother, तुम्हारे भाई की कोई प्रशंसा करे तुम्हें अच्छा नहीं लगता. So that's where there is a lot of this symptoms of low self-esteem. Okay, now in this you see a picture. देखिए यहाँ पे some girls इस लड़की को ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? bully कर रहे हैं. Who is the one having low self-esteem in this picture? The girl. Huh? The girl who's getting bullied. Okay. Anyone else? Hello. Yeah. Anyone else? Okay. Now, definitely the girl who's getting bullied is a victim here. Okay. Kushi has joined. Great. But the real inferior complex comes from the people who feel it's necessary to put someone down. You understand? ये जो bully लोग होते हैं ना, वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं. They are the ones who have guaranteed inferior complex. Of course, they're trying to hurt this girl. This girl may not have had, but they are attacking her, so she will naturally feel bad at that time. But this tendency, जो पहले से किसी को insult करना, किसी को नीचा दिखाना, that is being there. That is a sign of inferior complex. That's a sign of low self-esteem. Okay. Now, what is high? What is high or healthy self-esteem? What is a good यानी अच्छा आत्मसम्मान अच्छा होना, अपनी आत्म छवि अच्छा होना, इसका क्या मतलब है? High self-esteem is the opposite. It is a very important aspect of your life. If you have a high level self-esteem, you will be confident, happy, and sure of yourself. You would be highly motivated and have the right attitude to succeed. तो तुम जिंदगी में हमेशा कॉन्फिडेंट और खुश रहोगे, तुम अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करोगे. सेल्फ एस्टीम इज देयरफॉर क्रूशियल टू यू एंड इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ योर पॉजिटिव. तो आप सोच सकते हो कि आपकी जिंदगी अगर आगे अच्छी तरह प्रोग्रेस करनी है तो आपका आत्मसम्मान कितना जरूरी है. यू कैन नॉट इवन टेक अ गुड शॉट एट लाइफ इफ यू डोंट हैव अ हेल्दी से. यानी रेस शुरू होने के पहले ही गाड़ी पंक्चर हो गई, इस तरीके का प्रॉब्लम है. ओके, that's all. Now, person with positive self-esteem may be identified by several traits. Talent for communicating feeling and opinion. अभी जिसका अच्छा self-esteem होता है उसके आप कुछ गुण देखिए कि क्या दिख रहा है कि वो अपने फीलिंग्स को बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाता है. ओपिनियन को बहुत आराम से बोल सकता है. Like I can say कि lot of us are having complexes because आप अभी धीरे-धीरे आप open हो रहे हो, लेकिन lot of times you don't want to say because you're afraid of answering even in this group कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे. So definitely there are people who are struggling with this kind. You should overcome that. Okay, most people feel that we should overcome that. Good decision making, okay, so जिनका self esteem अच्छा होता है, they are very quick to respond, quick to give answers, quick to communicate their feelings and opinion. Good decision making because you trust yourself. तुम decision ले पाते हो, अच्छा decision, because तुमको confidence होता है खुद के ऊपर. So that's also a good thing. Withstanding peer pressure. तुम्हारे सारे दोस्त एक साथ बोले कि हमको ये करना है,
तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है नहीं करना मुझे, आई डोंट वांट इट, तो दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ गुड सेल्फ एस्टीम. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर बिहेवियर. आउट हो गया तो आउट. नो, आई हैड अ कजिन ब्रदर हु, उसको कभी अपना गलती मानना अच्छा नहीं लगता था. और मुझे पता है कि even when he used to get out while playing cricket, वो बैट लेके भाग जाता था. Even when he was 18 or 20 year old, he used to run away. He never wanted to admit that he is out. तो ये होता है. So one thing is that you must be willing to say कि okay, I did a mistake, or you know, ये मेरी गलती है. So accomplishing things at school or home, you know, so you can meet your target. स्कूल का काम कर पाते हो, घर का काम कर पाते हो. Sometimes you're doing so much of school work, but you neglect your household responsibilities. तुम अपना life manage कर पाते हो. That is a good way of self-esteem. Exhibiting pride in achievements without bragging. तो तुमको जब फर्स्ट प्राइज मिलता है तो तुम दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, एकदम अपनी बड़ाई नहीं मारते, तुम कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सेप्ट करते हो और बस लगे रहते हो. कुछ लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, तो वैसा नहीं होता. हैंडलिंग फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो. टैकलिंग चैलेंजेस एंड टेकिंग रीजनेबल रिस्क. कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स विद सिंसियरिटी. किसी की प्रशंसा करने में तुमको ये नहीं होता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, व्हेन समबडी टॉक्स गुड अबाउट अस वी रियली लाइक इट, बट किसी और के बारे में बोलने के लिए हम चोक करते हैं. अरे नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू प्रेज माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड. नहीं, यू नो, वी डोंट लाइक. बट दैट्स, यू नो, दैट इज अगेन अ साइन ऑफ बैड सेल्फ एस्टीम. एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म एंड ग्रोइंग. कभी तुमको कुछ बोले कि तुमने ये गलत किया, तो तुम गुस्सा नहीं करते, बोलते ओ दैट्स वेरी गुड, आई विल वर्क ऑन इट. दैट यू आर लाइक अ ट्रू स्पोर्ट्समैन. तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी ने तुमको मिस्टेक दिखाया. फीलिंग फ्री टू बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल. तो तुम किसी को कॉपी नहीं करते, तुम हमेशा एक नए तरीके से चीज करने की कोशिश करते हो. सो वन ऑफ द, अभी हमने देखा कि नेगेटिव सेल्फ एस्टीम का एक एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल, नॉट देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, इज low self-esteem is the tendency to bully others, put other people down. उसी तरह positive self-esteem का एक very good sign है कि अगर आप पॉजिटिव, आप एक self disciplined young man हो या young girl हो. Good morning. How many of you get up at what time? सच बोलो. Now you know, you will understand. I have seen that so many youngsters are getting up at 2 बजे उठ जाते, सीधा 2 बजे. उन्होंने मॉर्निंग सन देखा नहीं है, अर्ली मॉर्निंग सन कभी देखा नहीं. So there are people like that. They are very very bad. They don't have self discipline at all. Books ऐसे ही रख देते हैं, and that, you know, you waste your time, precious time. तुम्हारी जिंदगी के काफी दिन और काफी अभी ये लॉकडाउन के वक्त also you could have learned something, but बहुत से young people just took advantage, watched on media, video games वगैरह बस. So that is where what that shows is you don't really care about your life. इससे पता चलता है कि तुम अपनी जिंदगी को वैल्यू नहीं करते. तुमको लगता है मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, but actually it means कि तुम अपने आप को productive, fruitful, you don't really care about yourself. So जो आदमी अपने आप को डिसिप्लिन करता है, that is a person who actually loves himself in the right way. अगर if you're spending hours playing video game या फिर मिरर के सामने या फिर मोबाइल के ऊपर तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो, सोते रहते हो, कभी भी उठते हो, खाते हो फ्रिज से, that actually means you are having a low self-esteem, because you don't care about your body, you don't care about your time. तुम तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं, तुम अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते, कोई छोटा मोटा कोर्स या स्किल एक्वायर नहीं करना चाहते, बस टाइम. दैट शोज दैट यू एक्चुअली हैव लो सेल्फ एस्टीम. So you need to beat your body. Paul says, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Okay, now self-discipline, lack of self-discipline is the source of low self-esteem. Joe, you know, this is what is important. A lot of us, we don't like to discipline ourselves. Subah 5 baje utna, oh no, I cannot do that. But if you struggle, or agar aap subah उठ के जल्दी से अपना काम करोगे, you will slowly start feeling good about yourself. You will start feeling, whenever you try to do something good, you will actually feel good about yourself. तुमको अच्छा लगेगा अपने बारे में कि अरे मैंने करके दिखाया. तो डिसिप्लिन पेनफुल होता है, लेकिन बाद में तुम्हें अच्छा लगता है. Nothing in life is easy.
there's always unforeseen challenges and problems. To beat these, you must pursue, be strong and likewise eating disorders, problem associated with excess or alcoholism with willpower. तो जिंदगी में कुछ भी करना है तो तुमको मेहनत करनी है. तो अगर तुम मेहनत नहीं करते तो तुम डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारा अपने आप काबू नहीं है. Now, have you ever seen there are two kinds of people who जो अपने कुत्ते को बाहर लेके जाते. एक आपने देखा होगा कुत्तों को जो लेते ना बेल्ट लेके. अभी आपके पास कितनों जन के पास कुत्ते मुझे पता नहीं है, लेकिन there are some people who are the dog is they are walking and the dog is just following them or walking with them. But there are other people जिनका कुत्ता उनको खींचते रहता है. they cannot go इधर जाना पड़ता है. तो that is exactly how it is. Your body is like that dog. तुम्हारा शरीर उस कुत्ते की तरह तुमको खींचता है. चलो अभी सोना है तो सोना है, अभी तुमको वीडियो गेम खेलना है, वीडियो गेम, टीवी देखना है, तो तुम तुम्हारे सेंसेस को कंट्रोल बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. तो ये बहुत गलत है. सो दैट्स वन थिंग यू शुड रियली टेक इट. ओके, नाउ so self discipline, esteem, इसका काफी गहरा कनेक्शन. Being in control of yourself, your emotions, actions boost your confidence. It affects how you see yourself. Your self image is so much better when you know you can succeed and change. It affects your ability to see a project through. It allows you to stay focused on your goals, and it enables you to stay in control of yourself and your reactions. तो तुम्हारे काफी सारे तुम टारगेट्स मीट कर पाते हो, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं. बहुत बहुत जरूरी है. Really all of you are here. You are very blessed that you are seeing this, because many people are going to miss this session. उनको ये पता भी नहीं होता. Okay, now how to develop a healthy self-esteem? How to अपने आप को अंदर से कैसे बेहतर बनाना है? How do you make yourself strong from inside? Okay, now some people क्या करते हैं, मिरर के सामने जाके खड़े होते बोलते हैं, hey, you are the greatest, you are the best. अपने आप को आर्टिफिशियल पंप करने की कोशिश. अरे वाह क्या दिखता है तू, वाह वाह वाह. You try to do all that, but that is not going to. It is only for that time pass. You will be blowing air in the balloon, but it is not going to work. Okay, now let me just ask you. Let me make let's make a list of things that you like about that young people like you, that makes you feel good. आपको क्या ऐसी कौन सी चीज है जब आप वो करते हो या पहनते हो या जिसके वजह से आपको लगता है कि you feel good about yourself. You can even answer in a general way. What are some of the things youngsters like? After that उनको थोड़ा अच्छा लगता है. They feel good about themselves. उनको लगा recognition मिल गया. Anyone? Yes. Talents? Yes. Okay, talents is one thing. Okay, let's make a list. Talents और कोई है? Yes. Any other? Lot of young people ये इन चीजों के वो डिपेंड करते कि ये मेरे पास हो तो मैं फिर अच्छा हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने बारे में. Talents और क्या? Anyone? Come on, so many things are there. फटाफट. Can you answer, unmute and answer, or put it on the chat? Better unmute and answer so I can quickly type. Few things जिसके वजह से young लोगों को बहुत confidence आ जाता है कि मैं बहुत special हूँ, मैं बहुत value हूँ, या फिर मुझे recognition मिलता है. Yes, anyone? Huh? Come on, quick. Okay. Looks. Many people are very proud of their looks. I'm like Salman Khan and I'm like that. Okay, yes, thank you for this contest. Success in work. Yes, success. Yes, you mentioned looks of success. कि मैं एग्जाम में देखो मैंने मार्क्स निकाले, देखो मेरे जैसा कोई ब्राइट नहीं है. सक्सेस से भी लोगों को कॉन्फिडेंस होता है. और क्या, एनीथिंग एल्स? ब्रांडेड क्लोथ्स. या देखो मैंने अच्छा जैकेट खरीदा, लेदर जैकेट. Yes, very good, Amen. Excellent. Instagram followers. Yes, Insta में मेरे इतने followers है. देखा इतने likes, एक घंटे में 100 likes. देखा मैं कितना popular हूँ या famousness is the same social media.
Yeah, able. Okay, okay. Somebody has said. Okay, okay. Maybe what you mean is basically getting approval. लोगों की बड़ाई मिलना, उनको बोलता है, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, तुम्हें अच्छा, तो यू आर लिविंग टू प्लीज पीपल, उनको दूसरों की बड़ाई के लिए, अप्रूवल ऑफ अदर्स, ओके, ठीक है, ये मिलता है तो यू फील गुड, इसमें नॉट नेसेसरीली नेगेटिव, लेकिन ठीक है, कभी कभी यू स्कोर वेल, यू डू वेल, तो पीपल विल अप्रिशिएट, दैट इज ओके, अप्रूवल ऑफ अदर्स, यस, तब यू फील गुड। और क्या है, एनीथिंग एल्स? अरे मैं तो 2 कॉलम बने, आप इतने स्लो जल्दी जल्दी। अरे so many things are there, you know, you visit some place, जिससे you feel good, या फिर तुमने कुछ ओपिनियन बताया और सब लोग बोला हाँ you're right, you're absolutely right, तुमने correct बोला, especially some guys and girls say, oh you're good, you're right, what you said is correct, the guy feels like wow, I'm great, I'm great. तो ऐसे होता है. So there are so many things, you know, clothes, followers, all of that. And your opinions, तुम्हारे answers, class में तुमने answer किया, teacher बोले absolutely right, Mr. Ivan, yeah, absolutely right, you said good, a great answer, Rohan. तो खुश हो जाते हैं, अरे सबके सामने टीचर ने मुझे appreciate किया, तो all these kinds of things happens, yeah. Now, here's the next thing, okay. External things, ये जो external things है, like clothes you wear, how good you live, the things you, a mobile phone, things you possess. आजकल लोगों को मोबाइल फोन जितना अपडेटेड हो, दैट आल्सो बिकम्स अ प्राइड ना फैक्टर, सो may make you feel good for a while, but lasting happiness can be found even if you do not possess all these. You know, ये सब चीज तुम्हारे पास नहीं भी हो, तो भी you should be able to feel good about yourself. That is what true self-esteem is. If your self-esteem is dependent on your clothes, on how good you look, और लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, और the mobile phone you carry, that, yeah, you know, that actually means कि तुम्हारे पास self-esteem नहीं है. So that's actually means that's the wrong thing, you know. So it's actually not the right thing to do. Okay. So now here's a personal story. Now we will try to understand what is good self-esteem. Okay. Here's a personal story written by someone. I have an older sister, मेरी एक बड़ी बहन है, who is much more talented and beautiful. मुझसे बहुत सुंदर और बहुत होशियार है. Friends, neighbors, our parents, they constantly compare us. हमेशा मुझसे compare करते हैं. तो अब दोनों को, I hate to be seen with her. मुझे बहुत गुस्सा आता है जब हमारा comparison होता है, क्योंकि they always mention she is very beautiful, लेकिन when they look at me they just keep quiet, कुछ ज्यादा वो बोलते नहीं, बस मेरी बहन को बोलते हैं अरे ये बहुत सुंदर है. So I grew up thinking I was ugly, क्योंकि मेरी बहन की हमेशा प्रशंसा की जाती थी, मुझे लगता था कि I am very ugly, I am not smart, मैं उतनी intelligent नहीं हूँ. It affected the way I interact with people. I didn't have any self-confidence and constantly compared myself with others. I got over my inferior complex only when I was able to shift my focus from people's opinion to God. That is what has changed me. So ये सब चीज, so how this constant compare, घर के अंदर ही this person was damaged because उसके elder sister के साथ, तो हमेशा अपने आप को compare करते करते वो अपने आप को और destroy कर रही थी. Finally she was able to focus on God and come out of it. Okay. Now an accurate way, अगर self esteem आपको अच्छा चाहिए तो मिरर में देख के नहीं, वर्ड ऑफ गॉड में देख के, परमेश्वर को देख के ही आप अपने आप को वैल्यू कर पाओगे, अपने आप को करेक्टली लव कर पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे, लाइक कर पाओगे. फर्स्ट 3 थिंग्स यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. योर ओके, नाउ गॉड व्यू, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, ये बहुत जरूरी. आप अपने बारे में, सोसाइटी आपके बारे में, पेरेंट्स आपके बारे में, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट गॉड थिंक्स ऑफ यू, हाउ गॉड सीज यू. You are not a mistake, okay? According to God, you are very precious. You are a valuable person. आप बहुत मूल्यवान हो. You are a unique person. आपके जैसे पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और you are an unrepeatable person. आपकी कोई कॉपी नहीं. परमेश्वर आपके जैसा फिर से किसी को नहीं बनाएगा. You are that special. ये महसूस करने की कोशिश करो कि you are so precious to God, okay? Now I'll just tell you this, maybe some of you have seen this. पहले, for example, this is एक 500 rupees की नोट है, okay? Yeah? Okay.
नाउ इसको मैंने ऐसे क्रश किया, मान लो मैंने क्रश किया इसको, इसको मैंने थूका, इसको मैंने नीचे डाला, इसके उसको बहुत मारा, मैंने पैरों के नीचे मैंने इसको रौंदा, आई क्रश्ड इट, आई कर्स्ड, इसको गाली दिया, और मैंने इसको ओपन किया। इसके बाद क्या ये अभी भी 1 सेकेंड ना, या इज इट स्टिल 500 और एज इट बिकम 400 रुपया हो गया ये? कैन एनीवन टेल मी? रोहन कितना है ये? या इट विल 100 rupees. या इट इज नॉट इवन 490, 1 रुपया भी इसका कम नहीं है, करेक्ट? तो सिमिलरली फ्रेंड्स, आप चाहे आपके जिंदगी में व्हाटएवर हैज हैपेंड, कितना भी गलत हुआ हो या आपने खुद, इवन इफ यू हैव डन सम बैड मिस्टेक्स जिसके वजह से यू फील अनवर्दी और अशेम्ड, तुम अपने आप को कॉकरोच की तरह देखते हो, बट गॉड स्टिल सेज दैट यू आर प्रेशियस टू मी, यू आर प्रेशियस। तुम्हारा 1 रुपया, 1 सेंट भी, 1 पैसा भी कम नहीं हुआ है, या एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि तुम इतने प्रेशियस हो, दैट इज व्हाई जीसस डाइड फॉर यू। परमेश्वर ने अपना बेटा को जाके, दोस्त, माय फ्रेंड, तुम कैसे भी हो, यू आर प्रेशियस टू मी एंड जीसस केम एंड डाइड फॉर यू। परमेश्वर ने अपना बेटा, प्रभु यीशु कचरा के लिए नहीं मरा, प्रभु यीशु एक कॉकरोच के लिए नहीं मरा। तो अपने आप के बारे में कॉकरोच की तरह मत सोचो। You are a lion, you are a horse, you are a precious son of God, child of God. That is why Jesus came and died. तो अपनी वैल्यू क्या है? क्रॉस है। क्रॉस की तरफ देखो। Whenever you don't like yourself, whenever you feel you're not good enough, remember that God loves you so much. That प्रभु पर आप, if अगर आपको किसी मार्केट में बेचना हो, Amazon पे बेचना हो, आपकी वैल्यू क्या रहेगी? सन ऑफ गॉड। रोहन की वैल्यू क्या रहेगी? सन ऑफ, इसको एक परमेश्वर का बेटा इसके लिए मरा, ये इसकी वैल्यू। That's what it is. So that is what the value for Eben, for Abel, for Somnath, for Adam, for Angel, for Joyce, for Eben, for Ivan, for George, for Alishina, for Amen, for Leah, yeah, for anyone if I missed, yeah. तो परमेश्वर का बेटा आपकी, ये आपकी वैल्यू। और आपको पता है जीसस क्राइस्ट डाइड ऑन द क्रॉस, हाँ, वो तीसरे दिन फिर से उठा और वो 40 दिन बाद वो स्वर्ग में गया और उसने राज सिंहासन पे राज किया। तो उसी के साथ क्या हो गया पता है? आपको भी वही दर्जा मिला। यू हैव ऑल्सो गॉट दैट। आप भी क्रॉस पे मर गए और आपको एक नई जिंदगी मिल गई, आपको भी स्वर्ग में जगह मिल गई, इसलिए आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु का सारा आशीर्वाद, ऑल द ऑनर, all the riches that God showered upon Jesus Christ, you have now. There is a verse in the Bible says that you have a place on the throne of God along with Christ, कि यीशु की जैसे ही आपको सम्मान मिले, क्योंकि आप भी परमेश्वर के बेटे होंगे। देखो, प्रभु यीशु ने क्रॉस पे आपकी जगह ली और उसने स्वर्ग में वाली जगह में आपको हिस्सेदार बनाया। That is what it means। आप कितने प्रेशियस हो। आपको पता है प्रोडिगल सन की स्टोरी, जब वो पिताजी आके वो गुमराह हुए बेटे को क्या बोलते हैं, इसके ऊपर अंगूठी डालो, उसको सिर्फ माफ नहीं किया, उसको बोला उसके एक पार्टी ले लो, इसके ऊपर अच्छे कपड़े डालो, उसके पैरों में चप्पल, उसको किस किया। दैट इज हाउ परमेश्वर ने आपको ऑनर किया। सो हमेशा ये याद करना, दिस इज योर वैल्यू। यहाँ ये आपका सेल्फ एस्टीम का सेंटर है कि इन क्राइस्ट, बिकॉज यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, यू आर द सन ऑफ गॉड and you are loved by God। तुम हमेशा, परमेश्वर तुमसे हमेशा प्यार करे, तुमसे गलती भी होगी तो भी he loves you, because यीशु के लहू से आप पूरी तरह ढक गए हो। your entire lifetime के पाप, ओके, you are unique, आप एकमेव दुनिया में हो, इस बड़ी दुनिया में आप एकमेव, you are unique, you can succeed, और आप जिंदगी में जरूर कामयाब होगे। that is what it means, okay। तो in Christ you are loved, you are unique, you can succeed, always remember that। now Ephesians 1, अब हमारे पास टाइम नहीं है, but I'll just say Ephesians 1:21 में देखिए कि यहाँ पे जो भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे है वो आप पे लागू हो। देखिए आपको स्वर्गीय में ही प्रॉपर यहाँ पे लिखा है कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड यू वर चोजन। आपको लगता है यू आर बोर्न इन
85 या 95 2000 जो भी है, बट परमेश्वर ने आपको इस दुनिया के बनाने के पहले ही आपको चुन लिया था। कैन यू इमेजिन दैट? और तभी आपको प्रभु ने ब्लेस किया था। और यीशु में आपके इतने सारे ब्लेसिंग्स आपको मिले हैं, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग स्वर्ग में, कि आपको ये जानना जरूरी है। इसलिए पौल बोलता है कि वर्स 17 में कि 18 में कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आप रिकग्नाइज करो कि आपकी वैल्यू क्या है, कि आपको पता चले कि आपकी स्वर्ग में आपको क्या अभिषेक मिला है। So a lot of us don't know spiritual value, and we are always measuring ourselves according to earthly value, and that is why we are always suffering in self-esteem. Okay? तो ये सब चीजें हैं। I am the salt of the earth, I am the light of the, मैं परमेश्वर का मैं एक नमक हूँ, मैं प्रभु की का प्रकाश हूँ इस दुनिया में। ये आप याद रखिए, ये आपकी आइडेंटिटी। प्रभु का वचन क्या, परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ये सब आप यहाँ से आपकी नॉट फ्रॉम योर क्लोथ्स, आपके कपड़े, आपका मोबाइल फोन का ब्रांड क्या, आपके दोस्त क्या कहते हैं आपके बारे में, आपके एग्जाम रिजल्ट नहीं। दिस इज फ्रॉम वेयर यू गेट योर सेल्फ एस्टीम। योर पिक्चर इज दिस, दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड सीटेड ऑन द थ्रोन, दैट्स योर रॉयल। आप रॉयल हो, रॉयल, परमेश्वर के बेटे हो, राजा के बेटे हो। That is what you are. Okay. Now let me ask you, क्या विराट कोहली, who's this person next to विराट कोहली? सानिया मिर्जा। Yes, सानिया मिर्जा। क्या विराट कोहली अपने आप को सानिया मिर्जा के साथ कंपेयर कर सकता है क्या, कि मैं, is it right? Yes. No. No, it's not right. Why? विराट कोहली क्या गेम खेल रहा है? What is his Cricket. cricket, and what does Sania Mirza play? Tennis. Tennis. So there is no connection. दूर दूर तक ये connection, ये cricketer कैसे अपने आप को compare कर सकते? Because they're totally different. उनके talent, उनकी specialty different है। अभी क्या who is this person? Ranveer Singh. And who is this person? This is Neeraj Chopra. Can Ranveer Singh compare himself with Neeraj Chopra? No, No. Who is Ranveer Singh? he's an actor. He's an He's actor. an actor, okay. And who is this guy? He's a javelin thrower. So it is like that. So हर एक व्यक्ति के अलग अलग यूनिक है। परमेश्वर ने भी आपको इसी तरह यूनिक बनाया। आप अपने आप को बिल्कुल दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। जैसे क्रिकेट टीम हो, एक बैट्समैन होता है, विकेट कीपर होता है, स्किप में फील्डर होता है, रनर होता है, बाउंड्री पे फील्डर होता है, स्क्वायर लेग पे कैप्टन होता है। हर एक क्रिकेट टीम बहुत सारे अलग अलग लोगों से, क्या क्रिकेट टीम में सबके सब बैट्समैन हो सकते हैं? कैन एवरीवन बी अ बैट्समैन? हेलो? नहीं। No, you cannot have, okay, so that is how it is कि can everyone be a fielder, bowler? No, all of them, सबके अलग अलग स्किल होते हैं, उसी तरीके से टीम बनती है। That is how it is, friends, कि परमेश्वर ने भी आपको यूनिक बनाया। अगर आप साम 139 पढ़ते हो तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने आपको आपकी माँ की कोख में भी परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने आपको डिजाइन किया। आपकी जो नाक है, जो ईयर्स है, जो आईज है, आपकी जो हाइट है, जो कॉम्प्लेक्शन है, आपकी जो गिफ्ट और टैलेंट है, जैसे आप, किसी का आवाज अच्छा है, किसी को म्यूजिक है, किसी को क्रिएटिव करना, ये सब टैलेंट्स प्रभु ने भरे आप। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। Is it possible for God to make mistake? No, you are making mistake. आप गलत हो कि आप अपने आप को नीचा देख रहे हो, you don't like yourself, ये वो पता नहीं, ये शैतान ने आपको डिसीव किया। Devil has deceived you. Okay? Now इन पूरे दुनिया में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। There's no one like you at all. Okay? इतने बिलियंस ऑफ लोगों में। Okay? Now let's look at, हमने जो पहली स्टोरी पढ़ी थी 2 सिस्टर्स के बारे में कि वो कैसे कंपेयर, अभी इस सिस्टर ने प्रभु को जान लिया, उसके बाद now see how she thinks, how this sister thinks. The realization that God saw me as his precious child, that I am loved, unique and can succeed, changed the way I saw myself. Abhi a change testimony. I began to see that I was special. I was not as smart and beautiful as my sister, but I realized that God did not want me to be like my sister. Wow.
I began to discover that I was good at something that she was not, so that made me more confident. I realized that God deliberately made us different and was happy with the way I was. Imagine if the whole world looks like Aishwarya Rai, it would be so boring. I'm unique and so are you. When I believe these things about myself, I feel secure and I'm able to face life's challenges confident. What she did, कि परमेश्वर को उसने यीशु को स्वीकार लिया, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई. वो बोली कि मेरी सिस्टर होगी सुंदर, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज है जो प्रभु ने बनाया जिसमें सिस्टर मेरे जैसे नहीं. मैं क्यों अपने आप को कंपेयर करूं मेरी सिस्टर के साथ? That is when she started understanding that परमेश्वर ने अलग अलग बनाया, पर्पसली अलग अलग बनाया, you know, and that's how her self-esteem and self-identity. Now I'm going to show you a video. Now this is where I need to stop the live